की भी परमिशन चाहिए ना। हाँ वही।
मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। सॉरी, हेलो। ओके, वो जो स्मॉल एस होता है, द स्मॉल एस इट स्टैंड्स फॉर summers are dry. Okay, we are saying the summers are going to be dry. So Mediterranean में clearly you have a dry hot summer and a wet winter. Okay, and CFB meaning clearly this is the marine west coast climate. Okay, ये marine west coast का जो climate होता है वैसा वाला climate मिलेगा आपको. ऑलराइट, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल टीएस मिलता है हमारे यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में टीडब्ल्यू नहीं मिलता है, जहाँ पे विंटर्स पर ड्राई और सिवियर होते हैं. वी डोंट, अरुणाचल प्रदेश में इट रेन्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन वन वे और अनदर, and winters are very severe. Okay, temperatures can rarely rise above mean temperature 18 डिग्रीज के ऊपर नहीं जाता है आपका. okay, किसी साल में कभी भी. कोल्ड क्लाइमेट्स जो होते हैं उसमें टुंड्रा है, ईटी है हमारे पास. वंस अगेन वी डू नॉट हैव द ईएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट. आपको जेएंडके में हिमाचल, थोड़ा सा हिमाचल एंड थोड़ा सा इसमें लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में आपको ये ईटी वाला क्लाइमेट मिलेगा, जहाँ पे नो ट्रू समर मीनिंग आपको सचमुच टेम्परेचर्स कभी बहुत ज्यादा राइज नहीं करते. ओके, एंड इट इज हाईलैंड. वी डोंट हैव एन हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट एनीवेयर इन इंडिया. ओके, we have an AM climate, we have a BW, BSHW, वो वाला क्लाइमेट मिल जाता है. You do not, and you have an AS climate, वो इसकी तरफ तमिलनाडु की तरफ एक AS क्लाइमेट मिल जाता है. ये वाला ऊपर हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड लिटिल बिट ऑफ हिमाचल उत्तरांचल, वहां पे आपको ईडब्ल्यू मिल जाता, ई मिल जाता है, एक ईटी मिलेगा आपको. एंड देन ये जो राजस्थान डेजर्ट वाला पार्ट है दैट विल बी बीएसएचडब्ल्यू, एंड ये इस तरफ का बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू होगा ये वाला, बिकॉज ये प्रॉपर डेजर्ट है. ये तो ग्रासलैंड से कम से कम, लेकिन दिस इज प्रॉपर थार डेजर्ट, राइट, मरुस्थल की बात कर रहे हैं. ये CWG इज, दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ द गंगा प्लेन्स. सो वहां का क्लाइमेट मिलता है. क्लियरली द स्मॉलर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर ड्राई विंटर्स. DFC stands, DFC माने क्लियरली आपका नो ट्रू समर ना, जैसे नो ट्रू समर. सो वो वाला एक क्लाइमेट मिल जाता है. एंड देन मोस्टली आपको बीच में इंडिया में सवाना वाला क्लाइमेट मिल जाता है, जहां विंटर्स ड्राई होते हैं. लुक एट द कोरोमंडल कोस्ट, यू गेट द AS क्लाइमेट वेयर द समर्स आर ड्राई, विंटर रेन्स मिलते हैं आपको यूजुअली रिट्रीटिंग या बैक ईस्ट मॉनसून से. Okay, and AMW is the normal climate. India the general climate is classified as AM. Okay, because आपको western coast पे winters dry मिलते हैं, and eastern coast पे coromandel coast पे clearly you will get the dry summers. Okay, और बीच में एक और stretch मिलेगा आपको dry savannas वाला. Okay, is this good? हाँ, ठीक है. All right, back to business. We begin with India economic now. Very little logic to follow here. आपको मोस्टली ज्योग्राफी, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी फिजिक्स जैसा पढ़ाया है, बिकॉज मोस्टली देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक टू फॉलो ओवर देयर, है ना. लॉजिकल चीजें होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो क्लियरली यू कैन बिल्ड अप ओवर इट. बट यहाँ पर इसके बाद इट इज ऑल डेटा डेटा एंड डेटा. सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई टू रीटेन इट एज मच एज पॉसिबल, एंड दैट इज इट. ओके, ठीक है. For this particular thing, 2011 में census किया था. That has been 15 years now. India is clearly in the middle of another census. We are gathering data. The government is doing that, but the census isn't out yet. When it will be, you should be careful about that, because you will be asked questions on the census, because that will be a new hot topic. I have not seen questions on the 2011 census since a very, very long time in your papers. Okay, but that does not mean, that does not really, that does not discount the fact that UPSC might just decide to come up with this question this time. Okay, one more thing. I will give you the data for the 2011 census, but I have also marked the data that National Family Health Survey has come up with in the recent times. Okay, तो वो जो डेटा है वो मैंने ब्रैकेट्स में लिखवाया है ऐसे, जहां पर नॉर्मल 2011 का डेटा है उसके बाजू में ब्रैकेट्स में मैंने NFHS का डेटा लिखवाया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा. ओके, ठीक है. Now here we go. India is the 7th largest country. Please know the first 6. Can you name the first 6 countries above India? You can, of course you can. Russia, Canada, China, USA, Brazil is just above us. Australia is above us. Okay, USA, Australia, USA, Brazil, Australia. Good. Okay, here we are. India is the 7th largest country by area in the world. It is the most populous nation in the world. 1.4 billion, 1.47 billion is the current population. Okay, ठीक है. हम 2011 के सेंसस में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन हुआ करता था. 1.21 बिलियन वाज आवर पॉपुलेशन बाय द 2011 सेंसस.
and percentage of world population at that time that we carried was around 17.8. Okay, we are saying 17, वो ज़्यादा vary नहीं हुआ है, 17.7, 17.8 has been a share of world population. Okay, rural population जो है वो जब हमने सेंसस किया था तब 68.84 था एंड अभी फिलहाल 62.4 है. ओके, एंड अर्बन पॉपुलेशन जब हमने सेंसस किया था तो 31.6 था, अभी 37.6 है. ऑलराइट, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो जब हमने सेंसस किया था तो 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर थी. दैट इज हाउ यू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी. अभी जो फिलहाल पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज एट 497 पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके, डिकैडल ग्रोथ रेट माने हर 10 इयर्स में एवरी टाइम दैट वी डू अ सेंसस हमारा पॉपुलेशन कितने रेट से ग्रो करता है. ओके, तो in 20 from 2001 census to 2011 census the decadal growth rate was around 17.64%. Now the decadal growth rate is pretty much less, na? Almost half of what it was. 10.42 is the decadal growth rate. Is that a good sign? Is that a bad sign? It's a good sign. It's obviously a good sign. Okay, life expectancy in India currently 71.3 years पे है and 2011 census के हिसाब से 67 years की थी. We should have gone somewhere near 73 anyhow, but that COVID के calculations really changed everything because a lot of people passed away, right? So the life expectancy was brought down very much so. Okay, median age currently, median age मतलब the average age of any Indian right now would be 29.2. अगर आप सबके ages add करें उसको median उसका draw करें तो 29.2 years होता है. Please remember life expectancy of women in India is much higher than in males. Okay, women की life expectancy 73.6 होती है, men की 70.5 होती है in general. Okay, okay, here we go. Data सबसे पॉपुलेटेड नेशंस जो है, सबसे पॉपुलेटेड स्टेट्स जो है 2011 के डेटा से वो बताते हैं. उत्तर प्रदेश टॉप करता है लिस्ट को, उसके बाद आता था महाराष्ट्र. आई एम टेलिंग यू द 2011 डेटा. ओके, उसके बाद महाराष्ट्र आता था, फिर बिहार आता था, then West Bengal and then Andhra Pradesh. Okay, these were the top 5 populated states. Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh. Okay, like I said, वो जो ब्रैकेट्स में रेड में लिखा हुआ डेटा है वो फिलहाल का करंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है. आप उसको अगर प्लीज आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखें तो प्लीज आंखें खुली रखें, दिमाग खुला रखें और ठीक से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. आपको 2011 का सेंसस का डेटा पूछ रहा है या फिलहाल का जो एनएफएचएस का डेटा है वो पूछ रहा है, और उस हिसाब से जवाब दीजिए. ओके, अगर आज का पॉपुलेशन पूछा तो उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट, बिहार लेटर, सेकंड पे, थर्ड पे महाराष्ट्र आएगा, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल ही रहता है एंड फिफ्थ पे मध्य प्रदेश होगा. इज दिस क्लियर? हाँ, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड सी आपको कौन सा डेटा पूछा जा रहा है, 2011 सेंसस का या फिर फिलहाल जो एनएफएचएस इज गिविंग दैट डेटा. ओके, ठीक है. लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स अगर देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी सिक्किम. सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड. उससे थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलेशन मिजोरम का है, उससे थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन अरुणाचल का, एंड देन गोवा एंड नागालैंड. ओके, दैट इज गोइंग टू बी द पॉपुलेशन फॉर द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स. ओके, इन दैट असेंडिंग ऑर्डर. ऑलराइट, सो हियर वी आर सेइंग सिक्किम पहले, सिक्किम का सबसे पॉपुलेशन कम है, उसके बाद मिजोरम का, उसके ऊपर थोड़ा सा अरुणाचल, उसके ऊपर थोड़ा गोवा एंड उसके ऊपर नागालैंड. ओके, ये लिस्ट अभी भी वैसे ही है. इफ यू चेक आउट द एनएफएचएस डेटा उसके हिसाब से अभी भी सारा जो लीस्ट पॉपुलेशन है स्टेट्स में वो कुछ इसी हाल में है. ओके, एज फार एज यूनियन टेरिटरीज आर कंसर्न्ड कि जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो यू आर गोइंग विद एनसीटी माने दिल्ली फर्स्ट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी. उसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फिर फॉलोड बाय पुडुचेरी. 2011 का डेटा बता रहे हैं तो पुडुचेरी नेक्स्ट आता था. 12th standard, I don't mind if you're not paying attention, that is up to your discretion, but if I see anybody talking, I'm throwing them out of this classroom. No patience for you guys today. Do you understand that? And I don't care what you're talking about. Only if you can prove it's a matter of life and death or national security, only in that case you will be allowed to speak, and at your age, I don't think you get to do that now. Do you? उसके बाद आता है पुडुचेरी, देन चंडीगढ़ बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलेटेड यूटी. उसके बाद आता था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देन दादरा एंड नगर हवेली. दिस इज 2011, so clearly दादरा एंड नगर हवेली and Andaman and Diu used to be two separate entities. Okay,
देन आता था दमन एंड दीव, एंड देन लक्षद्वीप आता था। ओके, सो टॉप सबसे पॉपुलेटेड अगर कोई यूटी था तो दैट वाज एनसीटी, सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड अगर कोई यूनियन टेरिटरी था तो दैट वाज लक्षद्वीप। ओके, दैट डेटा रिमेन्स अनचेंज्ड इवन टुडे। ओके, वो डेटा अभी भी नहीं बदलता है, लेकिन अब उसके बीच के थोड़े से पोजीशंस ऊपर नीचे हो गए। तो अगर आप फिलहाल का डेटा देखें तो एनसीटी इज द मोस्ट पॉपुलस, followed by J&K. J&K used to be a state earlier, na? We decided to make it into union territory in 2020. So obviously now it has, उसका population तो है, state के हिसाब से population था उसका. So clearly now it is second over there. फिर उसके बाद पुडुचेरी आता है, देन चंडीगढ़, देन दादरा नगर हवेली दमन दीव, वो सब साथ आते हैं, देन अंडमान निकोबार, देन लद्दाख एंड देन लक्षद्वीप। ओके, सो योर मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज हैवंट चेंज, बीच में थोड़े से चेंजेस हो गए। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से ठाणे डिस्ट्रिक्ट जो है इन महाराष्ट्र, दैट हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। ओके, फॉलोड बाय, नाउ इफ यू सी तो नॉट 24 परगनास इन वेस्ट बंगाल एंड बेंगलुरु अर्बन इन कर्नाटका आर द मोस्ट पॉपुलस। ओके, तो वो एक डेटा है, ठाणे का चेंज नहीं हो गया है अभी भी, ठाणे स्टिल हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। ओके, अगर लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स देखे जाए तो देन यू हैव दिबांग वैली इन असम एज द लीस्ट पॉपुलस, followed by Anjar in Assam. Anjar district is also in Assam, and then Lahore state in Himachal Pradesh. Okay, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये लीस्ट पॉपुलस में आ जाएंगे। तो मोस्ट पॉपुलस इज गोइंग टू बी ठाणे डिस्ट्रिक्ट, लीस्ट पॉपुलस इज गोइंग टू बी दिबांग वैली। ओके, ठीक है। नाउ यू गो ऑन टू द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, population density माने you are saying कि density कितनी है, density depends on area, right? You are saying कि एक square unit of area में, एक square kilometer of area में कितने लोग मिलते हैं, उसको हम population density कहते हैं। ओके, सो ये इसका वेरिएशन क्लियरली हर जगह जगह पे होगा, अभी टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, जनरल कल्चरल हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है। सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होती है। ओके, सो जितने भी यूटी से हमारी यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे आपको हर जगह पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है। Almost all northeastern states have very low density. Hilly regions है, topography थोड़ी terrain is not very plain or normal, so clearly वहां पर थोड़ी सी low density होती है। Okay, that is the general idea. एंड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स वाइज या ऐसा देखें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई मानी जाती है, एंड लाहौल एंड स्पीति की सबसे लो मानी जाती है। ओके, हिमाचल प्रदेश में अभी का फिलहाल का डेटा देखेंगे तो दिबांग वैली की पॉपुलेशन डेंसिटी वुड बी द लोएस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली स्टिल हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। But Chennai, among the states, Chennai has the highest population density among the states. Okay, city-wise, Chennai is going to have the highest population density. Okay, now you check this out. Population density के सारे states देखिए, highest and lowest वाले. Okay, तो highest population density आपको बिहार में मिलती थी 2011 डेटा के हिसाब से, then West Bengal होता था, then Kerala, then उत्तर प्रदेश, then हरियाणा. Okay, that was how the population density went. अगर फिलहाल का देखें तो बिहार वेस्ट बंगाल स्टेट्स जैसा है, Kerala and Uttar Pradesh have simply changed their places. Okay, so वो हो जाएगा, and Haryana still remains where it was. Least population density अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे कम लोग आपको population density के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। Okay, please try to understand. Can you see Mizoram in both places over here? 2011 डेटा में सबसे कम पॉपुलेशन में एंड सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी में दोनों जगह पे सेकंड नंबर पे मिजोरम आता है। You got to remember things like that because there are so many states, and if you're reading this data for the first time, you're never going to be able to memorize it unless you start making connections over there. Okay, so whether it is the population, whether it is the population density, either tables में Mizoram stands at second place in the 2011 data. Okay, अभी भी देखिए जिनका लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें अरुणाचल है, मिजोरम है, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, दैट यूज्ड टू बी द 2011 लिस्ट। अभी के लिस्ट अगर आप देखेंगे अभी के डेटा पे तो सिर्फ मणिपुर का थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश हो गया है, मणिपुर की जगह पे हिमाचल प्रदेश आ गया है। ओके, अदरवाइज इनमें इन सब स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। ओके, ठीक है, सिक्किम में तो जनरली पॉपुलेशन ही सबसे कम था, रिमेंबर सिक्किम रैंक्ड फर्स्ट इन दैट लिस्ट, इन द लिस्ट पॉपुलेशन लिस्ट। ओके, यूनियन टेरिटरीज में NCT Delhi has the most population density. Okay, then followed by Chandigarh, then Puducherry, then Daman and Diu, then Lakshadweep, then Dadra Nagar Haveli, and then Andaman Nicobar Islands. Okay, so according to the 2011 census, Andaman Nicobar Islands used to be the union territory जिसका population density सबसे कम था. Okay, and NCT का population density सबसे high था. अभी के फिलहाल की लिस्ट देखेंगे
तो क्लियरली लद्दाख इज हैपेंस टू बी द यूनियन टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है. ओके, इज दिस गुड? वो चेंज नोटिस किया आपने? सो वी आर सेइंग दैट इज गोइंग टू बी द चेंज. ओके, ऑलराइट, moving forward, now we are checking out how the growth of population happens. Okay, so we are saying कि population कैसे grow करता है. You're saying कि in a given place, if the number of people and a given time period, okay, whether you're checking that over 10 years, whether you're checking that over a year, annually check करो, decadally check करो, you're saying कि the growth of population मतलब change in the number of people living in that area. Okay, that is what you're saying between 2 points of time. So हम usually जब census करते हैं तो हम 10 years की gap पे usually data revise करते हैं हमारा. You can do that annually also अगर आपके पास इतना time है and you know if you have the resources to do that. Okay, so ये rate usually आप percentage में express करते हो. Okay, सो फैक्टर्स जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं यहाँ पे बर्थ रेट होगा. पॉपुलेशन किस चीज से चेंज होता है कि न्यू पीपल आर बीइंग एडेड, न्यू पीपल आर बीइंग बोर्न, सम पीपल हु एग्जिस्टेड अर्लियर डाइड, सो डेथ रेट एक कैलकुलेट करेंगे एंड लास्टली माइग्रेशन देखेंगे आप. ओके, सो दैट इज वन थिंग यू सी. सो वी आर लुकिंग एट बर्थ रेट माने यू आर सेइंग कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ये डेफिनेशंस है, ये भी उनको पूछने की आदत है तो देख लीजिएगा. द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर. ओके, पर 1000 मेजर कर रहे हैं हम लोग. वी आर चेकिंग हाउ मेनी लाइव बर्थ्स हैपन पर 1000. Okay, death rate जो होता है that is the number of deaths per 1000 of the population per year. Okay, so per 1000 of the population जितने लोग मरे उसको हम death rate बोल देते हैं. Okay, and infant mortality rate माने कि 1 साल से नीचे जो भी बच्चे थे वो कितने मरे per 1000 live births. Okay, so now the comparison is you compare 1000 live births, okay, and compare them to the data where kids died within 1 year of their age. Okay, उसको infants बोलते हैं. 0 to 1 years का अगर बच्चा होता है तो उनको infants बुलाते हैं. तो वो इन्फेंट्स कितने मरे वो डेथ कैलकुलेट करते हैं हम लोग. ओके, सो ऑब्वियसली यू वांट द बर्थ रेट्स टू बी लो. द रीजन बीइंग कि हम सोच रहे हैं कि नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एंड द प्रॉब्लम इट कैन और द स्ट्रेस इट कैन ब्रिंग ऑन द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. सो वो हम रियलाइज करते हैं एंड वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट्स. ओके, डेथ रेट कम होना चाहिए क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ये है कि यार पीपल क्यों मरते हैं यूजुअली बिकॉज इनफ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इनफ न्यूट्रिशन नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा होगी, यू नो दीज कैन बी द रीजंस. क्लियरली गिवन द स्टेज इंडिया इज इन, डेथ रेट्स कम ही होने चाहिए, है ना. तो वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर दैट कोविड वाला डेटा, दैट वाज एन एपरेंट, राइट, दैट वाज एन एपरेशन. वो नहीं कंसिडर करना चाहिए आपने because that is something that never happened earlier, है ना. इससे पहले हमने पैंडेमिक्स नहीं एक्सपीरियंस किए थे हमारे लाइफ टाइम में. So clearly that should not have happened. Okay, and infant वो कंसिडर करेंगे, उसका डेटा मैटर करेगा. But I'm saying normal death rates में you should not consider a you know a catastrophe like that. Infant mortality rate once again कम ही होना चाहिए because it means कि अगर ये रेट ज्यादा होगा तो clearly it means आपकी कंट्री के मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट गुड इनफ, है ना. आप इनफ केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हो टू फॉर न्यूबॉर्न चिल्ड्रन एंड फॉर न्यू मदर्स और वीनिंग मदर्स, तो क्लियरली वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उस केस में. ओके, now let's look at the regional variation in population growth. Okay, what the regional variation is. आपको सेंसस के बेसिस में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक ट्रेंड्स पूछते हैं एंड एक एक्चुअल डेटा या स्टैट्स पूछते हैं. ओके, सो ट्रेंड्स जब पूछते हैं तो आपको ये पूछते हैं कि फीमेल लिटरेसी यूजुअली नॉर्दर्न एरियाज में कम है, ज्यादा है, सदर्न स्टेट्स में थोड़ी कम है, ज्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कम है, ज्यादा है. तो वो ट्रेंड होता है. ओके, यू आर लुकिंग एट अ ट्रेंड ओवर देयर, व्हेयरएज एक्चुअल डेटा इज कि बाबा नंबर्स बताओ कि ये 4 स्टेट्स हैं, उनको नंबर्स के हिसाब से अरेंज करो कि कहाँ पर फीमेल लिटरेसी या मेल लिटरेसी ज्यादा है, कम है. ओके, so you have to do this in 2 ways. Either you do that either you do that in the sense of a trend, वो ट्रेंड्स पता होने चाहिए, एंड दूसरा आपको प्रॉपर स्टैट्स पता होने चाहिए. So here we go, we are looking at the regional variation in population growth. Basically normally northern states जो है वहां पर population growth का जो रेट है वो थोड़ा ज्यादा ही है as compared to southern states. Okay, अब वो तो बहुत नॉर्मल है. Female empowerment is a little more in southern states. Northern states में क्योंकि थोड़ा ज्यादा patriarchal society है. Education के levels males females दोनों में थोड़े से कम होते हैं, तो awareness जो है वो भी education and you know mental अगर health related awareness जो है, population related awareness जो है वो भी थोड़ा सा कम है. तो these all things are going to matter. Female education clearly southern states में थोड़ा सा ज्यादा है, तो clearly and females are independent money earners, so clearly वो जो बच्चे क्रिएट करने का या प्रोड्यूस करने का रेट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है. टोटल फर्टिलिटी रेट बुलाते हैं हम उसको, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट्स भी थोड़े से कम है वहां पे. ओके, मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूटीज में हाई ग्रोथ रेट है. ओके, नाउ दैट डज नॉट मीन कि मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या यूटीज में पीपल आर जस्ट मेकिंग मोर किड्स. ओके, उसका ये मतलब नहीं होता है. like I said, population में आप birth rate, death rate and migration calculate करते हो, right? Most of the UTs or union territories in India are
बिजनेस प्लेसेस, राइट, यहाँ पे कमर्शियल बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज चलती है। अब दमन दीव को ले लीजिए, वहां पे फीमेल जेंडर रेशियो जो है, सेक्स रेशियो जो है वो बहुत कम है, बिकॉज सारे के सारे लोग उठकर वहाँ काम करने जाते हैं, राइट। अब कहा जाता है कि कंडीशंस बहुत आइडियल नहीं है वहां पे काम करने के लिए, because it is a humid climate and all that sort of thing. So the living conditions aren't very great. Purely people are going there because आपके सारा pharmaceutical industries, chemical industries वही situated है, तो आप कहाँ सारे मेल्स ही जाते हैं ना, and हमारे यहाँ पे पैटर्न कैसे माइग्रेटरी पैटर्न है वर्क का, राइट। पीपल इवन इफ दे डू नॉट फाइंड वर्क इन देयर प्लेसेस, वो उसी स्टेट में रहते हैं ये जरूरी नहीं है, वो किसी और स्टेट में चले जाते हैं, वहां पर दे सीक वर्क, राइट। सो यू आर लुकिंग एट दैट। सो मोस्ट ऑफ दिल्ली को देखिए, दमन दीव को देख लीजिए, चंडीगढ़ ऑल्सो फॉर दैट मैटर। सो ये सारी यूटीज में यूजुअली थोड़ा सा हाई प्रोफिट मिलता है, और वो माइग्रेशन की वजह से ज्यादा होगा। ओके, नागालैंड यूज्ड टू, अरे दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। नागालैंड का अगर 2001 का वगैरह डेटा देखेंगे तो क्लियरली वहां पे उनका जो पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ रेट था वो बहुत हाई था, उनका पॉपुलेशन भी वो बहुत हाई रिकॉर्ड करते थे। तो नागालैंड गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया था कि उन्होंने डेटा थोड़ा सा ओवर इन्फ्लेट करके दिया था, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया था, बिकॉज क्लियरली अगर आपका पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट से मिलने वाले ग्रांट्स या ये जो होते हैं हेल्प जो होती है, हाँ जी, मनी जो मिलता है गवर्नमेंट से वो भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो उन्होंने डेटा को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया, फिर इस बार जब ठीक से कैलकुलेट किया 2011 में, तो टर्न आउट किया उनका एक्चुअली ग्रोथ रेट कम हो गया। ओके, पॉइंट माइनस 0.5 वगैरह ऐसा कुछ ग्रोथ रेट था उनका। So Nagaland had showed a very high growth rate in the two earlier census, but a negative growth rate if you look at the 2011 census. Okay, तो Nagaland को please याद रखिए, it is the only time any state in our country in any census has ever shown a negative growth rate. Okay, इससे पहले किसी भी स्टेट ने कोई नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं रिकॉर्ड किया था। ओके, हमने एक बार 2011 द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड 1921, उस टाइम पे इंडिया ने एक बार एक ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम दिखाया था, बट उसका कारण था एक पैंडेमिक, एक एपिडेमिक था। ओके, एंड एपिडेमिक था एंड ऊपर से ड्रॉट भी था एंड एवरीथिंग, एंड पीपल जस्ट लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स देयर। रिमेंबर यस्टरडे भैया वाज टेलिंग यू, यस्टरडे नहीं, डे बिफोर यस्टरडे और 2-3 days ago, कि चर्चिल had said कि how can you say there is a drought or a famine in India? गांधी तो अभी तक जिंदा है, like remember that? पोस्ट जमाने की बात करें हम लोग, वी आर टॉकिंग ऑफ 1918 और समथिंग, कि there was such a huge famine in India that people were clearly dying. There was also an epidemic around it. Okay, so a lot of people died. That is 1 year when that happened. And modern history में जब से हमने सेंसस करना शुरू किया तब से नागालैंड ने 2011 में जो नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया, दैट इज द फर्स्ट टाइम। ओके, फिर बाकी के देख लीजिएगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ये यूजुअली थोड़ा सा हाई ग्रोथ रेट दिखाते हैं। ओके, मेघालय बीइंग द टॉप मोस्ट इन दैट, तो वो थोड़ा सा हाई ग्रोथ रेट दिखाते हैं, एंड नागालैंड, केरला, गोवा, आंध्र, सिक्किम, दे शो अ लो ग्रोथ रेट। ओके, सो वंस अगेन ये वाली स्टेट्स थोड़ा सा कम ग्रोथ रेट दिखाते हैं। एंड करंटली अगर करंट डेटा देखेंगे तो तमिलनाडु इज द स्टेट दैट शोज द लीस्ट ग्रोथ रेट। ओके, तमिलनाडु ने सबसे कम ग्रोथ रेट दिखाया है इन द करंट डेटा। ओके, ऊपर का सारा डेटा इसका है, व्हाट डू यू से, सेंसस का, 2011 सेंसस का। इज दिस गुड पीपल? हाँ, प्लीज रिमेंबर दिस डेटा। चलो जी, how many people have geography in 12th standard as a subject? Give me a minute. Since we are dealing with geography over here, आपकी टेक्स्ट बुक में ना एक ये था, एक थ्योरी बताइए आपको, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ओके, उसको ठीक से समझ लीजिएगा बिकॉज वो आपको पूछा जाता है। Okay. ये वाला जो थ्योरी आपको फिलहाल दिखा रहे हैं, डायग्राम जिसका दिखा रहे हैं, दैट इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ओके, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मतलब आपका डेमोग्राफिक या आपका पॉपुलेशन ट्रांजिशन फेजेस में से जाता है, वो 5 फेजेस आप प्लॉट कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट फेज जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ हाई स्टेशनरी फेज। ओके, हाई स्टेशनरी मानी क्लियरली बर्थ रेट बहुत हाई है, डेथ रेट बहुत हाई, नजर आ रहा है ना आपको, ये लाइंस नजर आ रही है, यू कैन मेक आउट द फेजेस, राइट। First stage is high stationary, second is early expanding, third is late expanding, fourth is low stationary, and fifth is decline. ऐसे 5 स्टेट्स मिलते हैं जिसमें से योर पॉपुलेशन गोस थ्रू। ओके, कोई भी नेशन का पॉपुलेशन इन 5 स्टेट्स में से चला जाएगा। ओके, ये सबसे अर्लीस्ट स्टेज होगी और ये सबसे लीस्ट, सबसे लास्ट वाली स्टेज होगी। ओके, तो ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, कैन यू ट्रैक दिस ब्लैक कलर्ड लाइन? हाँ, दैट इज द डेथ रेट। हाँ, वो रहा आपका डेथ रेट।
ये जो पर्पल कलर का लाइन है दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द बर्थ रेट, वो आपका बर्थ रेट है। एंड ये जो रेड कलर का लाइन है वो आपको बताता है कि आपका पॉपुलेशन कितने बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ओके, दैट इज द रेड कलर लाइन जो है वो पॉपुलेशन की है। सो फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज द हाई स्टेशनरी स्टेज, उसमें क्लियरली बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। नाउ यू लुकिंग एट वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ द कंट्री, वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ अ पॉपुलेशन, जहां पर क्लियरली कोई अवेयरनेस नहीं होता है, कोई साइंटिफिक नो हाउ नहीं होता है, पीपल आर जस्ट लिविंग टुगेदर, द आइडिया ऑफ अ नेशन और वर्किंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर एज अ नेशन, वो भी बहुत लैकिंग होता है। साइंटिफिक नॉलेज बहुत लैकिंग होता है, कोई आइडिया नहीं होती है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा उतना वो रिसोर्सेज पे कितना स्ट्रेस करेगा, या फिर वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, किसी चीज का कोई आइडिया नहीं था। ओके, सो यू आर सेइंग कि वो वाला स्टेज है, तो क्लियरली बर्थ रेट्स बहुत हाई होते हैं। ऑल्सो आई गिव यू वेरी प्रैक्टिकल रीजंस। पुराने जमाने में जब मोस्ट नेशंस यूज्ड टू बी इन दिस स्टेज, the medical facilities were not very great. Remember, I was telling you about 1918 epidemic when people used to die a lot. तो बच्चे बहुत ज्यादा मर जाते थे. Most children used to not survive up to adulthood or even teenagers भी नहीं बन पाते थे. तो पेरेंट्स का टेंडेंसी था कि more children create करो. Okay. ऊपर से most people used to have agricultural families. It used to help if you had a great family, large family. सारे सारे बच्चों को agricultural fields पे काम करने को लगा सकते हो. Okay. इतने सिंपल कैलकुलेशंस हुआ करते थे, इतना प्रैक्टिकल हुआ करता था सारा कैलकुलेशन, सो दैट इज व्हाई यूजुअली बर्थ रेट यूज्ड टू बी वेरी हाई। ओके, डेथ रेट का फंडा इसलिए हाई था, द होल कॉन्सेप्ट इज कि क्लियरली मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, सैनिटेशन फैसिलिटीज पुअर हुआ करते थे, पोर्टेबल पानी भी नहीं मिलता है, राइट, पीने का पानी भी अच्छा नहीं मिलता है आपको क्लियरली। आउट ऑल्सो क्या हो गया, यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो पीने का पानी भी नहीं मिलता था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलते थे, पीपल यूज्ड टू, अभी सी फॉर एग्जांपल नाउ आई कैन से कि कैन यू लीव द क्लासरूम विदाउट अ हिच? पीपल यूज्ड टू से फॉर एग्जांपल अगर किसी को बार बार हेडेक्स हो रहे होंगे, माइग्रेन्स हो रहे होंगे, तो हम जाके चेक करवाते हैं। ओके, डॉक्टर्स आजकल बताते हैं यार ब्रेन में छोटा सा एन्यूरिज्म है, उसको निकाल देते हैं, छोटा सा, वो ऐसा नहीं, ऐसा इट माइट बी बिनाइन, इट माइट बी कैंसरस, लेकिन कोई छोटा सा कुछ है दिमाग में, निकाल देते हैं, ट्यूमर जैसा, राइट, अ ट्यूमर। Sorry, I watched too many medical shows to call it a tumor. Okay, so we are saying वो छोटा सा aneurysm है, ट्यूमर है, उसको निकाल देते हैं. Okay, now अभी वो ठीक हो गया. Okay, वो तो मैटर क्लियर हो जाता है, that person can live long after it. Okay, पुराने जमाने में ऐसी हेल्थ कहाँ हुआ करती थी, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी स्पेसिफिक, राइट, मैं बहुत स्पेसिफिकली एंड बहुत रेयर चीज के बारे में बात करती हूँ, ब्रेन एन्यूरिज्म्स. ओके, लेकिन छोटी छोटी चीजें यार, तभी तो आज हम फ्लू भी सर्वाइव कर लेते हैं, राइट, हम सिर्फ 3 दिन की छुट्टी लेके घर पे बैठ जाते हैं. पुराने जमाने में फ्लू यूज्ड टू किल पीपल, इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड फेटल बिकॉज you had no medicines, you had no cure for it, ट्रीटमेंट नहीं थी, पता नहीं था कैसे ट्रीट करते हैं. How COVID stumped us a few years ago, वैसे हर disease used to stump people and civilizations of that time. Okay, so clearly death rates used to be really high. Okay, अभी देखिए second stage में क्या हो रहा है, death rate clearly fall कर रहा है. Okay, why? Because now you have better medical facilities, थोड़ा सा better economic progress है, तो लोग बहुत poverty नहीं है, people can get 2 meals, 3 square meals a day or something like that. खाना पीना मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, एंड क्लियरली वैक्सीनेशन वगैरह यहाँ सब कुछ हो रहा है. ओके, समथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, so clearly the death rate starts falling, है ना, second stage में clearly the death rate is falling over here. Okay, तो उस केस में, एंड लेकिन बर्थ रेट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है. हाँ, बर्थ रेट स्टिल रिमेन्स अ लिटिल हाई. कैन यू सी दैट द बर्थ रेट इज स्टिल अ लिटिल हायर बिकॉज पीपल को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चे क्रिएट करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, टोटल पॉपुलेशन का लाइन देखिए, सेकंड स्टेज में क्लियरली थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है. ओके, नाउ लुक एट द थर्ड स्टेज. हाँ, बाय दिस टाइम एवरीवन हैज रियलाइज्ड दैट जितना ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे अगले 20-30 सालों में, इतने सारे लोगों को जॉब्स देने पड़ेंगे, इन्हीं को खिलाना पिलाना पड़ेगा, कंट्री के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है ना. सो नाउ द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स इनिशिएटिव एंड स्टार्ट सेइंग कि नहीं नहीं, पॉपुलेशन कट डाउन करो. ओके, India went through the stage, India and China very simultaneously went through the stages in some 80s के दौरान, 70s 80s के दौरान. China made the one child policy. I have told you stories about it कि जिन पेरेंट्स ने 2 बच्चे किए, उन्होंने अपना एक बच्चा खुद पाला, एक बच्चा अपने बाबा को दे दिया पालने के लिए. वो ग्रैंड पेरेंट्स उसके कागजों पे, रिकॉर्ड्स पे वो बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बेटा कहलाता है. ओके, सो इस हद तक वो चाइना में इश्यूज होने लगे थे. So now, and China is back to saying कि now, no, please have 2 kids now. Please get married, have more kids. That is what China is doing because clearly they have realized, right, that the problem now कि उनके पास younger generation नहीं है, और 30 सालों में कितने लोगों को, China is such a huge, इतना बड़ा, it's a, क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं, वो जो रुकता नहीं है, behemoth something, there is a nice word for it, unstoppable. हाँ,
बेहमत, मैंने वही कहा, उसके आगे बेहमत इज स्टिल द एडजेक्टिव, राइट? आई एम लुकिंग फॉर द नाउन फॉर इट। सो अच्छा, बिग एलिफेंट बेहमत बुलाएंगे उसको, चल ठीक है। अच्छा, मैमथ नहीं, मैं बेहमत बोल रही हूँ, बेहमत। आई एम सेइंग बेहमत, आई एम सेइंग कि एक लार्ज ह्यूज ऐसा मशीन है जिसमें अगर आप इनफ वर्कर्स ना डालो तो वो बंद पड़ जाएगा। तो ना, इसीलिए वी आर सेइंग अरे जाओ शादी करो, बच्चे पैदा करो, हम आपको पैसे दे रहे हैं उस सब के लिए। So that's the reason they're really doing that. People are not getting married because we are more, हाँ, China में, Japan also, India also. How many? There is a lesser tendency ना. We have a more tendency कि नहीं, लिविंग में रहेंगे, शादी वादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करने हैं, है ना? डबल इनकम, नो किड्स, that is another फंडा that we have. So बहुत सारे फंडे ज्यादा बढ़ रहे हैं because people का individualism पे ज्यादा ये है. Okay, they are not looking for the, yeah, we are not looking out for the economy of the country. Okay, clear? So anyways, back to business. We are saying clearly इस स्टेज में जब हमने कहा हम दो हमारे दो वाला स्कीम करते हैं, है ना? बजाज, अरे हाँ, वो it used to be that way. हम दो हमारे दो used to be the ad that they used to make. There was a very famous, you know Bajaj, right? Bajaj scooters, right? उन्होंने उसके वो उस ad के बेसिस पे अपना खुद का एक सेपरेट कैंपेन चलवाया कि स्कूटर की ये आप दो और आपके दोनों बच्चों के लिए, even though it is dangerous, but we still did that campaign. Okay. So we are saying कि ये late expanding stage में clearly at this stage people realize कि बच्चे कम करने चाहिए तो birth rate fall कर जाता है. Okay. Also जो reasons मैंने आपको पहले दिए कि usually what happens is कि जितना ज्यादा women educate हो जाते हैं उतना वो independently काम करने लगते हैं and total fertility rates अपने आप नीचे आते हैं. मैं नेचुरल साइंटिफिकली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बायोलॉजी के हिसाब से नहीं बात कर रही हूँ, मैं साइकोलॉजिकली बात कर रही हूँ कि द टेंडेंसी टू सिट एट होम एंड मेक मोर किड्स इज लेसर if the woman is working. Okay. So clearly, and this is not, I am not, how do you say this? I'm not saying this in a good way or a bad way. मैं statistics बता रही हूँ आपको कि जितनी ज्यादा women usually employed होती है, आपका total fertility rate उतना कम हो जाता है country का, and clearly birth rates भी fall कर जाते हैं. Okay. So clearly at this stage the birth rate is falling. लेकिन the death rate is also continuously falling because you're making more and more progress, right? अब ज्यादा से ज्यादा progress करते जा रहे हो, medical progress, so clearly death rate भी गिरता जा रहा है. तो ये जो दोनों stages है, early expanding and late expanding, इसमें clearly आपको natural increase मिलता है ना? वो जो green color का दिख रहा है section, that is the natural increase in the population. Okay. Now by this stage, low stationary में देखिए birth rate बहुत low हो गया है, death rate भी बहुत low हो गया है, तो population आपका थोड़ा सा stabilize करने लगता है. And at this point, at some point of time, it reaches the peak. इससे आगे आपका पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है, फिफ्थ स्टेज में क्लियरली वो डिक्लाइन करता है. फिफ्थ स्टेज की खासियत देखिए, डेथ रेट तो प्रीटी कांस्टेंट रहता है क्योंकि ऐसी कितनी इमॉर्टल नहीं बना सकते ना आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी से. आप सिर्फ उनको हाउ डू से, हाँ, संभाल के रख सकते हो अंटिल नेचुरल डेथ आ जाए, है ना? वहां तक रख सकते हो. लेकिन ये वाला जो बर्थ रेट है वो क्लियरली अभी बहुत ही डेथ रेट के भी नीचे चला जाता है, मीनिंग जितने लोग मर रहे हैं उससे भी कम पैदा हो रहा है. ओके, दैट इज व्हाट यू सेइंग. सो क्लियरली यहाँ पर आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगता है. तो वो जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारी सुपर प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर फिलहाल ये हाल चल रहा है. ओके. That is why the reason why so many Scandinavian countries or even Canada for that matter or even Australia, they will give you so many आप स्टोरीज बता रहे थे ना मुझको, वो जापानीज लोग हमको बुलाते हैं, आओ हमारे यहाँ पे शादी करो, सेटल हो जाओ, है ना? वो वाली स्टोरीज. So these are the same stories because the population is not growing. So if you want your country to progress, at the end of the day, it does not remain about ethnicity anymore. You don't want, आपको सबको हिटलर नहीं बनना होता कि नहीं मुझको रेशियल एकदम सही से चाहिए, मेरी आर्यन रेस ही चाहिए. Nobody is necessarily looking for that. You are looking for your nation to progress. If you are looking for your nation to progress, it makes sense कि जिन लोगों के पास दिमाग है, जो काम करते हैं, उनको अपने यहाँ बुलाए, उनको अपने यहाँ सेटल करवाए और इसी वर्कफोर्स को इस्तेमाल करे अपने देश के इकोनॉमी के लिए. That makes more sense, right? Does it make sense to you? No problem. You never had to, आप लोगों ने तो कभी घर का भी बजट नहीं देखा हो. You wouldn't have to deal with that. हाँ, so you don't have to worry कि और 15 साल में 20 साल में नेशन कैसा लगेगा. Not that all politicians are thinking about it, or necessarily the administration is thinking about it, but definitely academic जो ऐसे academics पढ़ते हैं या intellectuals होते हैं वो definitely सोच रहे हैं. Okay, here we go. Now we are looking at the phases of growth population. वो जो demographic transition में 5 stages बताए, उसके इंडिया के 4 stages आपको दिखा रहा है. Okay, तो first phase जो है
वो स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज है. ओके, 1901 से 1921 वाला. ओके, दैट इज द फेज दैट वी आर लुकिंग एट. वी आर सीइंग वेरी हाई बर्थ रेट्स, वेरी हाई डेथ रेट्स एंड ग्रोथ रेट जो था वो बहुत कम था. एक 1911 to 21 में हमने एक नेगेटिव ग्रोथ रेट भी रिकॉर्ड कर दिया, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी 1921 इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, बिकॉज इन दैट ईयर व्हेन वी मेजर्ड द सेंसस, जब हमने पॉपुलेशन सेंसस किया था तो हमने नोटिस किया कि हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया था. द रीजन भी 1918 में क्लियरली बहुत बड़ा पैंडेमिक एपिडेमिक हुआ था, एंड उसके पहले वी हैड famines and stuff also. Okay, so a lot of people died in pure poverty. खाना ना मिलने की वजह से, मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर गए. Okay, so that is that thing. So we are crediting it to poor health and medical services, illiteracy of people, insufficient food distribution services. No, the British was the government. British government था तभी. They were not hyper concerned कि लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा, लोगों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बारे में उनको concern नहीं था. Okay, then you have the second phase. Okay, अभी second phase जो है वो that is 1921 to 1951. That is the period of steady population growth. अभी यहाँ से हमारा population rise हो गया. High birth rate था लेकिन death rate clearly fell a little. Okay, because we had better sanitation, better health facilities, food distribution system थोड़ा better था, transport and communication facilities were a little better. Okay, so उसकी वजह से you have क्या हो गया, clearly period of population explosion हो गया. Okay, this is the time that the population really exploded, 51 to 81 में. So this is the third stage. Okay, ये वाला स्टेज में पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाई फर्टिलिटी रेट था, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट हो गया, बिकॉज हमने क्लियरली हमारा इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी वेल ड्यूरिंग दिस पीरियड. रिमेंबर दिस इज 30 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिटवीन दैट पीरियड. So you are saying कि centralized economic planning था, economy better हो गई थी, improvement of living conditions थे, and increased international migration भी था. We had a lot of people going from here to there. Okay, ठीक है. And phase 4 is from 1981 to present. Clearly, we have realized that population explosion is not going to help us. It is only going to stress our resources. So we are trying to cut it down. Okay. So gradual slowdown हो गया, low birth rate, low death rate हो गया. See, once again, like we discussed, increase in mean age of marriage जो है वो बढ़ गया था. पुराने जमाने में लोग 20-22 में शादी कर लेते थे. Okay. अभी तक तो 30 is normal, 26 to 30 is considered normal, right? Improved quality of life, better education, especially for females. Like I said, if the female is educated, the total fertility rates are going to come down because she is going to try to work. Okay. Yes. हाँ हाँ, 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की था, एंड इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए थे, राइट, अपने सोल्जर. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द लेक्चर अंटिल प्रिया पास. उसके बाद फिर आपका जो करना है वो होगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या, कहाँ बैठना है, क्या करना है. People listen now. Here we are back to rural urban composition. Okay, now इसका डेटा हमारे पास 2011 का है मोस्टली. ये चेंज नहीं हुआ है बहुत ज्यादा. ओके, आपके पास सिर्फ स्टेट्स का डेटा बदला है, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिलता है आपको. सो 2011 का डेटा मानकर चल लेते हैं हम लोग. ओके, सो रूरल अर्बन composition, रूरल मीनिंग those people who are engaged in primary occupations. Okay, rural occupations या rural population उन लोगों को कहेंगे who are engaged in primary occupations. What are primary occupations? Agriculture, mining, fishing, hunting, gathering. Hunting तो बहुत लोग नहीं करते अभी, वो तो बैन most countries में, लेकिन hunting, gathering है ना. Sorry, इंडिया में भी बैन है hunting. बैंड है. हम सिर्फ वो सेंटिनल आइलैंड से नहीं जा रहे अपना वो बैन इंस्टीट्यूट करने, इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि हमने उनको खुली छूट दे रखी है कि आपको, आप बस सर्वाइव करो, आपको जैसे रहना है रहो.
वी डू नॉट इंटरफेयर इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. वी आर अफ्रेड कि हम उनको जाके डिस्टर्ब करेंगे, हम उनको जाके रोग एंड डिजीजेस देके आएंगे एंड उनका पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा. सो वी डोंट वांट दैट ना. सो वी आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम मोस्ट इंडिजिनस ट्राइब्स. वो अंडमान निकोबार के जितने भी इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उससे इंडियन गवर्नमेंट दूर रहता है, लेकिन अदरवाइज हम हर जगह पे जाके हमारे मेनलैंड पे तो जितने हैं उनके साथ तो डेफिनेटली इंटरफेयर करते हैं और उनको बोलते नहीं है हंटिंग नॉट अलाउड, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट है, नॉट अलाउड, ऐसे सब बोल लेते हैं हम. ओके. Here we are looking at rural urban composition. We say rural people, rural population meaning those people who are engaged in primary occupations, and urban population will be those who will be engaged in secondary, tertiary, quinary, है ना, quaternary, ऐसे वाले occupations में जो engaged होंगे वो. Okay, ठीक है. So we are saying कि definitely हमारे यहाँ पे urban population में increase हो गया है. टॉप 3 स्टेट अभी आ रहे आपके कैसा डेटा याद रखेंगे रखिए आप. I really don't know how you want to do this. Good luck. Top 3 states with rural population is going to be Uttar Pradesh because the size of the state is huge ना, वो सबसे ज्यादा population भी है उसी स्टेट का. तो क्लियरली उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन मिलता है, फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल में मिलता है. ओके. तो बॉटम 3 स्टेट्स विद द रूरल पॉपुलेशन हैपन टू बी सिक्किम, मिजोरम, गोवा. सिक्किम मिजोरम का पॉपुलेशन इसलिए बॉटम में आता है क्योंकि उनके बेसिकली पॉपुलेशन छोटे हैं. गोवा का तो 62% अर्बनाइज्ड है. गोवा में आपको मोस्टली रूरल पॉपुलेशन बहुत कम मिलता है. ओके. सो गोवा हैपेंस टू बी वन ऑफ द स्टेट्स विद द लीस्ट रूरल पॉपुलेशन. अर्बन पॉपुलेशन का टॉप महाराष्ट्र लेगा. द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया लाइज इन बॉम्बे, राइट. सो क्लियरली यू आर हियर. उत्तर प्रदेश वंस अगेन अर्बन पॉपुलेशन के लिए भी हाई है बिकॉज उनका पॉपुलेशन ही बहुत बड़ा है. इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर स्टेट. ओके. Followed by Tamil Nadu, once again less primary occupations and mostly people are educated and they are doing secondary or tertiary occupations. Bottom 3 states with urban population, once again see Sikkim, Arunachal, Mizoram, because the states are less. Unka population is basically come. Okay. So these 3 states happen to be the states with the least urban population also. Most UTs अगर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज तो उनके यहाँ अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा होता है. सिमिलरली जैसे उनके यहाँ मेल पॉपुलेशन ज्यादा होता है. ओके. एंड डेंसिटी भी ज्यादा होती है बिकॉज पीपल यूजुअली माइग्रेट टू दीज प्लेसेस टू वर्क, है ना. मेल पॉपुलेशन जो होता है वो मोस्टली इन यूटीज में जाके माइग्रेट कर जाता है क्योंकि उनको काम चाहिए होता है. इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट है, कमर्शियल बिजनेसेस है, तो वो सब कुछ है. ओके. 2011 के सेंसस के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का डेटा कंसिडर कीजिए. सबसे ज्यादा आपका अगर कोई रूरल अर्बनाइज पॉपुलेशन है तो दिल्ली में मिलता है. एनसीटी, हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली का पॉपुलेशन. फॉलोड बाय देन चंडीगढ़, देन लक्षद्वीप, देन दमन एंड दीव, देन पुडुचेरी, देन गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु. सो अगर स्टेट्स कैलकुलेट करनी है आपको प्रॉपर स्टेट्स, तो गोवा हैपेंस टू बी द फर्स्ट स्टेट, है ना. अर्बनाइज पॉपुलेशन के हिसाब से गोवा हैपेंस टू बी एट द टॉप. And then you get the difference between percentage of urban population and actual urban population, right? Maharashtra tops the list in most urban population, है ना. मतलब actual people, है ना, numbers में thousands, millions में people who are actually urbanized. Okay. Whereas percentage wise Goa tops the list. Okay. States में Goa tops the list. Then Mizoram, then Tamil Nadu, then Kerala, then Dadra Nagar Haveli. हाँ, that is going to be the option. And फिलहाल का अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली केरला इज गोइंग टू बी द स्टेट जहां पर आपको सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन मिलता है. फिलहाल का डेटा अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें तो वो ये है. आई एम रेफरिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बिकॉज दैट इज द ओनली डेटा. हम नॉर्मली सेंसस का डेटा सेंसस कैलकुलेट करता है, राइट. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका घर घर जाके डेटा ले लेता है, राइट. देयर इज अ डिफरेंस ना, वो डिफरेंटली डेटा कैलकुलेट होता है और उसका प्रोसेसिंग भी अलग से हो रहा है, लेकिन वो भी आपको एक्चुअल डेटा ही देते हैं. ये डेटा थोड़ा सा इंफ्लेटेड हो सकता है बिकॉज you know essentially they are just calculating कल रात को कितने कितने लोग घर पे आए थे और यहाँ पे सोए थे. You are looking essentially at that, है ना. You are not just counting कि आपके रेशन कार्ड पे कितने लोग हैं. So getting the difference between what I'm saying, there must be people on your ration card that may not actually live in your home because they are somewhere out working or doing something, है ना. वो डेटा है, तो वो डेटा का डिफरेंस है. सेंसस का एंड एनएफएचएस का जो डेटा का डिफरेंस है वो इस बेसिस पे होता है कि there is a difference between how many people are actually listed on your ration card and how many actually live inside your home. Okay, that. So Kerala happens to be the state, followed by Goa, then Lakshadweep, then both Dadra Nagar Haveli, Daman Diu, and then you have Puducherry, then Tamil Nadu, Mizoram and Gujarat. Okay, so Mizoram अच्छा खासा ये है, what do you say, urbanized है. All right, यार ये तो डेटा आपको पता है, this you should know. हमारे यहाँ पे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है. ओके. एंड सब 121 रिकॉर्डेड लैंग्वेजेस है एंड थाउजेंड्स में डायलेक्ट्स है. देयर इज अ डेटा व्हिच सेज कि हमारे पास थाउजेंड्स में, एक्चुअल थाउजेंड्स में द न्यूमरस, इतने न्यूमरस डायलेक्ट्स है हमारे पास. डायलेक्ट समझता है हाउ आई से मराठी इज अ लैंग्वेज बट वराडी इज अ डायलेक्ट और कोंकणी इज अ डायलेक्ट. हाँ, दैट वे वैसे बात कर रहे हैं. ओके.
So you see most spoken languages in India in that order, decreasing order में हिंदी almost 40 to 45% लोग बात करते हैं इस लैंग्वेज में इंडिया में. So Hindi happens to be the most spoken language in India, followed by Bengali. You're forgetting West Bengal में कितने लोग हैं, and then similar dialect में आपको ओडिशा वगैरह के आसपास के भी लोग मिल जाते हैं. So then Marathi, then Telugu, then Tamil, Gujarati spelling थोड़ी weird नहीं है? Urdu, Kannada, Odia, and then Malayalam. Okay. So ये आपके डिफरेंट डिफरेंट वो सारे लैंग्वेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए. ओके, हिंदी बीइंग द मोस्ट स्पोकन फॉलोड बाय बंगाली. ओके, रिलीजन्स के हिसाब से हिंदुइज्म इज द लार्जेस्ट रिलीजन फॉलोड बाय इस्लाम. दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स इन द कंट्री. ओके, हिंदुइज्म, देन इस्लाम, देन क्रिश्चियनिटी, then Sikhism, then Buddhism, then Jainism, then Zoroastrianism. Parsi people, those will be Zoroastrianism. Okay. आज के दिन क्या हुआ था? हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब का आज किया था इंस्टॉल उन्होंने. ओके, ठीक है. They did not पहले पब्लिश किया था. यूर से नो, यूर सेइंग हरमिंदर साहब में एक्चुअली जाके रखा गुरु ग्रंथ साहिब को, आज के दिन रखा. ओ, Golden Temple में. I tell you there is a reason why I have fun if he's in the class, because he'll come up with such things. I have no clue ऐसा किया था आज उन्होंने. 1604 में आज के दिन किया था, 27 अगस्त को, एंड आज के दिन क्राकतुआ भी हो गया था. अच्छा, ओके, 1883 में. हाँ, पहली ऑयल रिग जो उन्होंने डिग किया था, ऑयल वेल डिग किया था, वो पेंसिल्वेनिया में किया था. कर्नल हु? अच्छा, पेंसिल्वेनिया में किया था हमने फर्स्ट ऑयल वेल. यूएसए का फर्स्ट ऑयल वेल, दुनिया का भी फर्स्ट ऑयल वेल. नहीं, ये 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर है, आज नहीं देख सकती मैं, बट आई चेक दिस डेटा लेटर ऑन. 11th standard में they have time ना. You guys are giving your exam in a couple of weeks. I'm not doing that. I'll definitely check on that. But okay, thank you for letting me know. Okay, now we go to the gender composition. Okay, जेंडर कॉम्पोजिशन माने हम सेक्स रेशियो देखते हैं. तो सेक्स रेशियो जो होता है वो दूसरे लोग नंबर ऑफ मेल्स फॉर फीमेल्स कैलकुलेट करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर मेल्स कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जनरली मेल्स ज्यादा होते हैं. ओके, सो वी आर सेइंग नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स एज गोइंग टू, दैट इज गोइंग टू बी द वे वी कैलकुलेट. ओके, तो इंडिया का एवरेज सेक्स रेशियो जो है वो 940 है अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा. ओके, केरला एंड पुडुचेरी आर द ओनली टू यूनिट्स जहाँ पे सेक्स रेशियो इज अबव 1, मतलब जहाँ पर फीमेल्स आर मोर देन मेल्स. ओके, once again the very reason being Kerala, Puducherry, both places are very well known to have male population जो है वो बाहर जाता है नौकरियां करने, है ना. केरला के most people will go to Middle East और जाते हैं ना, नहीं जाते क्या? वो एक ट्रेंड है. एंड इट इज क्यों तेलंगाना आंध्र के भी बहुत लोग जाते हैं बाहर. There is a certain, you don't know what, इतने हम इतने ज्यादा गुजरातीज एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लोग या फिर टिपिकल महाराष्ट्रियंस वगैरह बाहर भेज देते हैं हम लोग हमारे कंट्री से बाहर, यूएस में एंड एवरीवेयर, कि जैसे एक नॉर्मल बाकी की जगहों पर जैसे चाइना टाउन. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चाइना टाउन इज? इट इज अ प्लेस वेयर you will find in a different foreign country where you will find Chinese eateries, Chinese cultural places, Chinese medicines, है ना, ये सब कुछ मिल जाता है. तो उसको चाइना टाउन बुलाते हैं, मोस्टली बिकॉज पीपल ऑफ दैट सेम एथनिसिटी यूजुअली लिव इन दैट प्लेस, तो उसको चाइना टाउन बुलाते हैं. आजकल कोरिया टाउन्स भी हो गए बाकी सारी दुनिया में, बिकॉज मोस्ट कोरियंस आल्सो गो आउट एंड सेटल सम प्लेसेस. हाँ, हम वहां पे जाते हैं. हमारा कैलिफोर्निया में बहुत फेमस महाराष्ट्र बंडर्स है. महाराष्ट्र बंडर इज अ वेरी स्पेसिफिक वे ऑफ सेइंग दीज आर ऑल मराठी पीपल गैदरिंग ओवर हियर to enjoy all their festivals, है ना. That is the general thing. So you will find a lot of Maharashtra bundles over there. वो वहां पे नॉर्मल स्ट्रीट्स पे निकल जाते हैं अपने ढोल ताशे लेके, जैसे हम गणपति पे निकलते हैं ना, वैसे वो निकल जाते हैं अपने नॉर्मल रास्ते पे. एंड वहां की गवर्नमेंट बहुत पोलाइटली एंड हैप्पीली अलाउ करती है. तो दिस इज नॉट बिकॉज इट इज लाइक अ नॉर्मल हाउ डू से कार्निवल जैसा होता है. ओके, यहाँ जैसे कार्निवल्स होता है वैसा होता है. तो वी आर सेइंग कि इतने सारे लोग ज्यादा माइग्रेट कर जाते हैं बाहर जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, कि क्लियरली वहां पे सिर्फ फीमेल्स ही रह जाते हैं. whether you are looking at Kerala or Puducherry, तो वहां पे यूजुअली फीमेल्स रह जाते हैं. जैसे महाराष्ट्र में बहुत मेल पॉपुलेशन अंदर आ जाता है ना, माइग्रेट इन कर लेता है, दे कम इनसाइड महाराष्ट्र टू वर्क. तो आपको महाराष्ट्र में फीमेल रेशो जो है, सेक्स रेशो जो है वो थोड़ा कम ही मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे बाहर से लोग माइग्रेट करा गए थे. ओके, तो हरियाणा, दमन, दीव हैव अ वेरी लो सेक्स रेशियो.
Haryana is for cultural reasons. Patriarchy is very high over there. Male child को ज़्यादा preference होता है. Daman and Diu once again same migration वाला reason है. Okay, तो उनके यहाँ sex ratio बहुत कम है. People, when I'm making these comments, I am trying to just give you statistics. Huh? I'm not making personal comments on any culture or any tradition of any part of a country. Let me clarify. Okay, here we are. By NFHS data, current average sex ratio is 1020. Okay, तो ये अभी फिलहाल का डेटा है. Once again, हम बिलीव करते हैं ये डेटा थोड़ा सा inflated है because, like I said, रेशन कार्ड एंड घर में जो रहते हैं उनका डिफरेंस. ओके, एंड लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी विल टॉप द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो. ओके, ये दोनों यूटीज जो है इसमें आपको सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मिलेगा. अगर आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो जहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मिलता है तो दैट इज गोइंग टू बी माहे डिस्ट्रिक्ट इन पुडुचेरी. एंड दमन एंड दीव हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो. वंस अगेन माइग्रेशन के रीजंस के लिए. ओके, दोनों में माइग्रेशन इज गोइंग टू बी द रीजन. ओके, इफ यू आर लुकिंग एट द जेंडर कॉम्पोजिशन स्टेट वाइज, तो जहां पर सबसे ज्यादा फीमेल्स मिलती है इन कंपैरिजन टू मेल्स, इट इज गोइंग टू बी केरला. ओके, फॉलोड बाय तमिलनाडु. 2011 के डेटा के हिसाब से तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन मेघालय. ओके, मेघालय में तो होने चाहिए फीमेल रेशो ज्यादा. वहां पे तो मैट्रिलिनियल सिस्टम है, राइट. रिमेंबर दो ट्राइब्स, गारो खासी जयंतिया, वहां पर लड़का लड़की के घर पे शादी करता है एंड उनके घर चला जाता है, उनके घर चला जाता है. एंड फीमेल्स जो होती है, घर की बेटियां जो होती है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है. इनफैक्ट आप अपनी मम्मी का नाम लगाते हो वहां पर, पापा का नाम नहीं लगाते हो इन मेघालय. स्पेशली इन दोस पर्टिकुलर ट्राइब्स, you take after your mother's surname, not after your father's surname. So the boy is not taking the girl's surname, but clearly that is essentially what is happening in a marriage. And usually जो सबसे छोटी बेटी होती है वो ancestral property inherit करती है उस family. तो that is मेघालय for you. So that makes sense कि वहां पर clearly female sex ratio जो होगा वो थोड़ा सा high होगा. Okay, अभी अगर फिलहाल का डेटा देखा जाए तो केरला still remains high on the female sex ratio. Look at the new addition. Rajasthan has suddenly come up there. Rajasthan, which used to somewhere be pretty low in the female ratio, the sex ratio, has now come up to the second place, followed by Bihar. Once again, a surprise. Then Tamil Nadu and then Manipur. I am saying this because culturally these places have maintained a favor for the male child. That is why I am surprised. Okay. Second जो है अभी next table जो है वो बताता है कौन सी states में least female ratio है. Okay. Haryana, Jammu and Kashmir, then followed by Sikkim, then Punjab, then Bihar. Okay. This used to be the 2011 list. अगर फिलहाल की list देखेंगे तो हरियाणा, followed by Punjab, then Arunachal Pradesh, then Gujarat, then Maharashtra. Maharashtra was always going to figure in this list because you have more and more immigrants coming. है ना, बहुत ज्यादा migrants जो होते हैं वो महाराष्ट्र में आके काम करते हैं. So here we go. Union territories को rank करते हैं on the basis of their decreasing sex ratio. पुडुचेरी सबसे पहले because उसका sex ratio सबसे high है, followed by Lakshadweep, then Andaman and Nicobar Islands, then Delhi, then Chandigarh, then Dadra Nagar Haveli, and then Daman and Diu. Okay, that is going to be 2011 का list. हम फिलहाल का list देख भी नहीं रहे. It's been some time now. It's been an hour since we started. Nobody is allowed to leave the classroom, but we can take a break for 5 minutes. Not that you need a break. But there are others who are really paying attention, so I'd rather give that break.
लिटरेसी कंपोजिशन करोगे। लिटरेसी माने इंडिया में 2011 सेंसस जो करता है कि लिटरेसी होता है जैसे आसाम के ऊपर का पढ़ना लिखना जानता हो और बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करना जानता हो। ओके, तो अगर आप सिर्फ पढ़ना जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते तो उस इंसान को लिटरेट नहीं बुला सकते। ओके, यू कैन कॉल दैट पर्सन लिटरेट पर्सन। एवरेज लिटरेसी इंडिया की 2011 सेंसस के हिसाब से 74.03% है। मेल लिटरेसी इज एट 82.14, फीमेल लिटरेसी एट 65.47. You can clearly see the gap between male and female literacy. And urban literacy was at 84.11, whereas rural literacy was at 67.77. Okay, that is the difference. Now, अभी अगर फिलहाल का डेटा देखेंगे तो clearly average literacy is at 80.8. Male literacy is 87, clearly risen. Female literacy काफी ज्यादा rise हो गई है, 74.6 बताते हैं हम लोग. Urban literacy is at 88.9, which is really good, and rural literacy is at 77.5. Okay. You have once again highest, अगर किसी states में highest literacy levels होंगे तो वो used to be according to the 2011 data, it used to be Kerala first, then Lakshadweep, then Mizoram, then Tripura, then Goa. Okay, अभी देखिए सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एकदम ऊपर निकल गए हैं। अभी का डेटा अगर देखेंगे तो मिजोरम रैंक्स हायर, दे आर अबव 95, माने क्लियरली फुल्ली लिटरेट बोल सकते हैं वो खुद को। Nagaland also the same. Kerala happens to fall to the third place. Meghalaya and Tripura. Okay, so these two have all of these northeastern states have simply surged ahead in case of literacy. Okay, now look at the lowest literacy that you find. Bihar, and it is, we are just looking at the top 5, no? Sikkim should be included in this list, लेकिन top 5 में नहीं है, क्योंकि जनरली ही टॉप 5 में नहीं आएगा वो, क्योंकि केरला हैज डिसाइडेड टू टेक द थर्ड प्लेस। सिक्किम इज जनरली वेरी वेरी एजुकेटेड, लेकिन वो 90s में होंगे। आई डोंट नो इफ दे आर अबव 95। लोएस्ट लिटरेसी जो होती है वो बिहार में 2011 के हिसाब से बिहार में सबसे कम हुआ करता था, देन अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, देन झारखंड, एंड फिलहाल के डेटा के हिसाब से सिक्किम की लिटरेसी इज 99.82। कैन वी गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स जिनका लिटरेसी उतना हाई है? Yeah. Mizoram I can understand, Nagaland also, Sikkim की 99.2 है you say. अच्छा 90, correct, because it is above 95. I don't know if Sikkim is 98 point. Okay. Which data are you referring to? Which website are you referring to? Government का कोई website है? अच्छा, actually ना गवर्नमेंट ना कभी कभी ऐसे मेमोज नहीं छापता है, वो पार्लियामेंट में डेटा देता है आपको स्टेट्स के लिए। बाकी बाकी यू नो द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ना, कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको डेटा सप्लाई करना पड़ता है, स्टार्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, रिमेंबर ऑल दैट। हाँ, तो उसमें जो गवर्नमेंट डेटा प्रोवाइड करता है वो यूजुअली क्रेडिबल मानते हैं हम लोग, मानना चाहिए, तो इसीलिए वी आर गोइंग बाय दैट डेटा। जो इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो रिलीज किया है मैं उस डेटा के हिसाब से बता रही हूँ आपको। Okay. Lowest was going to be, like I said, lowest used to be Bihar, Arunachal, Rajasthan, Jharkhand, and then Andhra. So currently the lowest is Andhra, then Bihar, then Madhya Pradesh, then Rajasthan, then Jharkhand. Okay. So this is literacy composition. Highest literacy पहले केरला में मिला करती थी, lowest बिहार में मिला करती थी, अभी फिलहाल highest literacy female literacy मिजोरम में मिलती है, and lowest आपको आंध्र प्रदेश में मिलती है। Okay. सेल्शिप नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में, दैट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन 2011 के सेंसस के हिसाब से। ओके, एंड अलीराजपुर इन मध्य प्रदेश यूज्ड टू बी द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ओके, ठीक है, ये एज कॉम्पोजिशन भी इंटरेस्टिंग है। वी से हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन 2011 के डेटा के हिसाब से 26 इयर्स के नीचे था। यू नो ना कि जितने लोग आपके पास छोटे छोटे ज्यादा लोग होंगे कम एज के, उतना इट मींस कि अगले 15-20 सालों में 30 सालों में आपके पास वर्कफोर्स उतना ज्यादा रहेगा। ओके, सो मेनी पीपल आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री बिकॉज दे विल ऑल बी इन वर्किंग कंडीशन बाय दैट टाइम। ओके, तो वी आर सेइंग कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम है उस एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन को जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीनिंग 15 to 60 इयर्स।
you're looking at a population between 15 to 60 years because that is the population that supposedly contributes to the GDP of the country. Okay? Chandrakant sir, I'll stop, sir. Geography. Current affairs. तू तुझ्या लेक्चर सोडून इकडे कुठे घे म्हटलं हा का बरं